Hi everybody, welcome to the Creative Edge YouTube channel. I am Muskan Mulchandani and today we are going to be doing a couple of questions that will be appearing, that have appeared, that we have seen the common tendency to appear in the verbal section of NATA. हाँ जी, नाटा का जो एग्जाम दे रहे हैं आप लोग या देने वाले हैं उसमें ये बहुत कॉमनली देखे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम आज करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नाटा के जो वर्बल सेक्शन है उसमें, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस. Yes. So the first question that is in front of you is find the misspelled word, right? The misspelled word is accommodation, accomplishment, accompaniment या accomplice. अब ये चारों जो words दिए हुए हैं, ये वाला जो question है, ये नाटा वाले जुलाई अटेम्प्ट में आया हुआ है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंग्लिश वाला सेक्शन करते हैं तो बहुत कॉमनली बहुत सारे डिजाइन और आर्किटेक्चर की जो एग्जाम्स हैं वो हमसे स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप निफ्ट नाम से कोई एग्जाम दे चुके हैं तो आप जानते होंगे कि उसमें भी स्पेलिंग्स आती हैं। नाटा में भी देखा गया है कुछ सालों से कि रॉन्ग स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट क्वेश्चन है, जो जिसका स्पेलिंग गलत है, जो एक्चुअली मिस स्पेल्ड है और जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है अकोमोडेशन, ठीक है। तो उसका जो रियल स्पेलिंग है वो होना चाहिए ACO, ऑलराइट। Yes, I'm extremely sorry for the technical glitch. Moving on to the next question that we have in front of us. The next one is substitute a word in place of the phrase that is given in italics. ठीक है? The sentence that we have in front of us is the word is no longer in use. तो मतलब हमको यहाँ पर क्या बताना है? हमको एक ऐसा मीनिंग दिया गया है और हमको बताना है उसके लिए जो अप्रोप्रिएट शब्द होता है वो, ठीक है। वहां पर जो चार वर्ड्स दिए गए हैं उन चारों की मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। डेसोलेट, डेसोलेट मतलब निराश, निराश होना, हताश होना। एंटीक, एंटीक इज पुराने जमाने का, एवरीबडी नोज दैट। एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीटली, टोटली, राइट। एंड ऑब्सोलीट मीन्स पहले एग्जिस्ट करता था, अब वो उस टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इट ऑब्सोलीट इज एक्चुअली द वर्ड दैट is what the word that is the meaning of the thing that is given in italics, all right. अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वो था, hi, I can see a couple of comments there. Hello, good evening. Obsolete, yes, some of you are commenting that the word is obsolete. Thank you so much. I'm happy that you all are participating actively in the live, and I'm very glad. Uh, what I would like to point out here is कि आप ये वाले जो questions है ये उस केस में ही solve कर पाएंगे जब आपकी vocabulary building at this point has reached a good level. Please remember that all the competitive exams that you are giving, vocabulary of as much as 500 to 800 words is needed, ठीक है। तो I'm sure that you must have worked on it, and I hope that you are able to crack it at your easiest and your calmest. All right. Moving on to the next question. Now, why have I taken these words specifically? आप अगर जो जुलाई का अटेम्प्ट आप देखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने टोटली जुलाई के अटेम्प्ट वाला ही उठाया हुआ है. Plus, I have added a few questions so that you can understand how the questions go. All right. Moving on to the next one. You have again a misspelled word question. Yes. Nitin here is asking me from where to do vocabulary. Vocabulary के लिए बहुत सारे sources हैं नितिन.
अगर आप लोगों ने क्रिएटिव एज के पे सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप नोटिस करेंगे वहां पर भी वोकेबुलरी के काफी सारे वीडियोस दिए हुए हैं. You can go to our channel, you can get in touch with the helpline number that is coming down, flashing down, and you will come to know of a lot of other sources that update you on the vocabulary that comes for these exams, specifically NATA एग्जाम. ऑलराइट, चार ऑप्शंस अब हमारे सामने जो दिए गए हैं वो है नेबर, नेक्टर, नेसेसरी एंड नेमेसिस. नेमेसिस का मतलब आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा. समथिंग दैट कॉजेज अ डाउनफॉल. ठीक है, जैसे किसी चीज का अंत शुरू करने वाली जो चीज होती है, ट्रिगर करने वाली जो चीज होती है, उसको बोला जाता है नेमेसिस. ठीक है, हाउ यू कैन यूज इज इट इन अ सेंटेंस इज that the boy was the cause of my nemesis when he came up with brighter ideas at the company that we worked. All right, so यहाँ पर मैंने किस तरीके से उसको यूज किया है. He was the reason that I was not respected anymore or I was not given any more work, क्योंकि उसका वर्क ज्यादा अप्रिशिएटेड था या whatever that way. ठीक है, तो नेमेसिस को उस तरीके से यूज किया गया है. All right. Yes, a lot of you are answering with the right answer. Yes, the answer is nectar. Thank you so much, Rishika Jigyasa. I can see that a lot of you are answering with the words. I am very happy, believe me, when I say that to see such active participation, I would really appreciate अगर आप में से और लोग participate करें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडमिट. प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ जुलाई नाटा. ठीक है, तो यहाँ पर जो एडमिट का मतलब है वहां पर चार वर्ड्स दिए हुए हैं. समझते हैं उनका मीनिंग क्या है. डिसमिस मतलब तखलिया, राइट, इन शॉर्ट. क्वांटिटी एवरीबॉडी नोस. कन्फेस करना मतलब सच बोल देना या जो भी, दैट इज व्हाट इट मींस. टिकट. अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एडमिट कार्ड को यूज किया गया है to try and confuse you, but please remember that that is not your answer. Your answer very clearly is confess. Yes, a lot of you are answering. Thank you, Nitin, Akil, Akanksha, Sri Lakshmi. I can see a lot of answers coming. Thank you so much, and a very big round of applause to each one of you who is participating. All right, next वाले question पर चलते हैं. Choose the odd one out. Again, this is one question that came directly. The options that you can see are easy. If I would like it in the comments, if each one of you, someone of you could tell me कि odd one जो है वो आंसर तो आप बता देंगे, बट वो odd one out क्यों है, जो तीसरे तीन हैं वो किस ब्रैकेट में आते हैं. All right, so let me see who is telling me the right answer and why that is the odd one out. Okay, so silk, milk, rubber and fur. तो जो ऑड वन आउट है हमारा वो है मिल्क. यस, तो मिल्क आंसर है ऑड वन आउट. बट आपको मुझे ये बताना है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं अगेन, बट आप लोगों में से किसी को मुझे ये बताना है कि बाकी तीन में सिमिलैरिटी क्या है. ओके, यस, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट. यस, मिल्क इज अ ड्रिंक, whereas the rest three, silk, rubber and fur, are all materials. प्लीज रिमेंबर दैट जब हम नाटा का पेपर दे रहे हैं, हम नाटा आर्किटेक्चर के एग्जाम के लिए दे रहे हैं. ऑल राइट, सो ऑल द क्वेश्चंस दैट कम, बी इट एप्टीट्यूड, बी इट इवन इंग्लिश, बी इट जीके, बी इट वॉट एवर, इट इज गोइंग टू बी पर्टेनिंग टू योर फील्ड. आप नोटिस करेंगे कि जब हम पैसेजेस भी करते हैं तब हमारे पैसेजेस भी पर्टेनिंग टू आर्किटेक्चर एंड ऑल ही आएंगे. ऑलराइट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आएंगे. ठीक है, यस, मिल्क इज ईटेबल. नो, मिल्क इज नॉट ईटेबल, इट इज एडिबल. ऑलराइट, सो ईटेबल नहीं होता है, वो एडिबल होता है. मिल्क इज एडिबल and other three are used as fabrics. Thank you so much. Moving on to the next one. Now you are at an analogy question. Again, like a trend, it has been seen that analogy के जो questions हैं ये सिर्फ नाटा में ही नहीं, दूसरे भी डिजाइन और आर्किटेक्चर एग्जाम्स में कॉमनली देखे गए हैं. ऑल राइट, सो आई वुड नॉट से दैट इट इज
There is no time left. You still have a couple of days left with you to go for डूइंग कपल ऑफ एनालॉजी क्वेश्चंस. प्लीज रिमेंबर, जो मैं ये वाले क्वेश्चंस आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती कि आप अपना फोकस दूसरे टॉपिक से हटाएं. ठीक है? आई एम श्योर दैट व्हेन यू आर गिविंग आर्किटेक्चर बेस्ड एग्जाम, योर priority will be questions, GK, drawing based on that. But do remember, like I have always said in my classes, हमारा इंग्लिश सेक्शन जो होता है वो हमारा स्कोरिंग सेक्शन होता है. ठीक है? वहां पर हमको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है. ऑलराइट? क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी लेवल के आते हैं. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाले एग्जाम्स की जो इंग्लिश based questions आते हैं, they are very easy. All right, so you need not rack your head too much into it. But now what you can do is you all can go through the types of questions that you encounter while you are giving a NATA. All right, so analogy is your top priority, odd one out another priority, synonyms antonyms another priority. All right, और अगर आप लोगों को समय मिलता हो थोड़ा बहुत इंग्लिश का, एटलीस्ट एक छोटा मीडियम साइज का पैसेज, जो हम अभी देखेंगे कि क्या लेंथ ऑफ पैसेज आता है, उस तरह का पैसेज कम से कम एक दिन में सॉल्व करिए, ताकि जब तक आप नाटा के लिए जाएं यू आर वेल प्रिपेयर्ड विथ योर लैंग्वेज सेक्शन एंड यू डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस सेक्शन एटलीस्ट. ठीक है? दिस इज योर लीस्ट टाइम गिवन सेक्शन विद द मैक्सिमम मार्क्स वाला सेक्शन. ऑलराइट? यस. बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि इसका आंसर है सी. ऑल राइट, सो आई वुड लाइक टू नो कि बैंक और रिवर का क्या रिलेशनशिप है जो आपने कोस्ट और सी में ढूंढा है. ठीक है? तो आंसर आप लोगों का सी है. थैंक यू सो मच. बट आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या रिलेशनशिप है. मैं यहाँ पर जो लाइव कमेंट्स आ रहे हैं वो देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना आया है. ओके, आई एम वेटिंग. In the meanwhile, I will answer a few questions that have come up on the chat. Rishika's asking me, ma'am, please practice passage questions. Yes, Rishika, we are going to practice a couple of passage questions also that we have included in this. But I'm first waiting to see कि आप लोगों में से कितने लोगों को इसका जो रिलेशनशिप है ये सही में समझ में आया है. हाँ जी, कोई समझ सका है क्या रिलेशनशिप है? कोई मुझे समझा सकता है? इफ इट इज इन द चैट यू ऑल कुड प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज द रिलेशनशिप that is between a bank and river that you have found between coast and sea. Yes, okay, thank you so much. Jigyasa says that land and water meet at a river, so that is, it's known as a bank, and when the sea meets the land, that part is known as the coast. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Jigyasa. And I'm sure that it is clear to each one of you also. Moving on to the next question. There is another analogy question again. Cub and bear and Joey and what? All right. तो वहां पर चार options जो दिए हुए हैं वो है cave, doll, kangaroo and truck. All right. So you have to tell me now what is the appropriate answer and what is the analogy between them. Yes? Lovely. I can see that there are answers coming, and the answer, as most of you said, is kangaroo. Yes, thank you so much. Oh, वो options switch हो गए हैं by mistake. All right. So the correct answer is kangaroo. Yes, the correct answer is kangaroo. And I would like to point out here that, like somebody is saying again in the chat, that Joey is a kangaroo's young one. जब मैं आपसे उसका explanation मांगती हूँ, the reason why I ask you the explanation is because I don't want you कि एक तुक्का लगा लो एक आंसर में और उसका तुक्का सही लग गया तो आंसर सही हो गया. Okay? What I want is, if you have understood what is the relationship, then it is going to be easier for you to solve
more questions pertaining to the same kind of thing. All right. So whenever I am asking you something like this, please participate and please answer. All right. In the meanwhile, uh, for those who still have difficulty connecting with us or are not able to get in touch with us, you have a number flashing on the helpline down below. You can get in touch with us at Creative Edge and we will be ready to help you, assist you. All right. Uh, yes, Nitin, I am trying to speak as clear as I can. Is this problem being encountered by, if there is this problem that's being encountered by everybody else, do let me know and we will get our tech team to work on it. Okay. Uh, yes. So moving on to the next question. Substitute a word in place of the phrase in italics, right? यही तरह का क्वेश्चन हमने किया था एक पहले भी. ठीक है. When a person has a compulsion to steal, मतलब चोरी करने की जरूरत नहीं है, बट चोरी करने की आदत लग चुकी है. ऑल राइट. अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे वर्ड्स दिए गए हैं. आई डोंट नो इफ यू हैव एवर सीन our vocabulary videos, but I would like to point out to you that when we are doing vocabulary videos, we do different tricks to learn vocabulary. You can learn vocabulary through forming word clusters or word groups, through root words, through various names of people, places, and everything, and through mnemonics or through audiovisuals. All right. So here I would like to explain to you how we can do these words or we can understand these words. ठीक है. सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है kleptomania. Yes. तो जिज्ञासा tells me that my voice is audible. So नितिन आपको प्लीज चेक करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि आपकी आवाज, आपके वहां पर कनेक्शन में कुछ एरर होगा, क्योंकि the voice is visible, audible to everybody else. All right. Rishika says, ma'am, please share the link of those videos in the description. Okay, Rishika, I will get someone to get in, uh, check with you and try and post the links to the same. All right. Moving on to the question. यहाँ पर mania comes from the Greek word madness. ठीक है. तो Greek का madness is the root word and that is where this word mania comes from. And klepto again in Greek language means stealing. All right. So when you have the pagalpan for stealing, what is that? It is a habit. आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, बट आपको आदत है. ठीक है. So mania means madness. Now how you can do this better is if you have gone through the vocabulary lists that are on our Creative Edge portal. All right. So please register, subscribe, go through those lists so that you know how vocabulary can be done and how vocabulary will help you in these last few days before your exams. All right. Moving on to the next one. We are at a passage, like बहुत सारे लोगों का डिमांड था, हम एक पैसेज पे आ गए हैं. ठीक है. मैं आप लोगों को कुछ समय दूंगी. In the meanwhile, I will also read the passage with y'all, and once we are through with the passage, we will do the questions together. All right. Vacations were once the prerogative of the privileged few. Prerogative matlab right. All right. Even as late as the 19th century. Now they are considered the right of all, except for such unfortunate masses as in China, for whom life, except for sleep and brief periods of rest, is uninterrupted toil. Toil matlab mehnat. All right. They are more necessary now than ever before because the average life is well rounded and has become increasingly departmentalized. तो पहले पैसेज में उन्होंने हमको क्या बताया था? पहले पैराग्राफ में उन्होंने हमको बताया कि पहले वेकेशंस सिर्फ कुछ लोग लेते थे, अब वेकेशन हर किसी की राइट बन गई है. ठीक है. राइट बन जाना मतलब इट हैज बिकम utmostly important कि कुछ भी हो वेकेशन तो लेंगे ही. दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. ओके.
बट हाँ, साथ में उन्होंने उस लाइन में ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया है कि बट देर इज दे हैव गिवन दिस एग्जाम्पल ऑफ चाइना दैट देर आर सम पीपल हु कंटिन्यूअसली कीप ऑन टॉयलिंग बट दे डू नॉट टेक अ vacation. Moving on to the next paragraph, the next paragraph starts with they are more necessary now than ever before because of the average life is well rounded and has become increasingly departmentalized. The idea of vacations as we conceive it must be incomprehensible to primitive people. Rest of some kind has, of course, been always a part of the rhythm of human life, but earlier ages did not find it necessary to organize it in the way that modern man has done. Holidays, feast days was sufficient. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में कैसा था। अब वो क्या बता रहे हैं कि वेकेशंस की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो वेकेशंस की सिचुएशन कैसी बताई गई है, वो बता रहे हैं कि अब हमारे लिए वेकेशंस और ज्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि अब हम लोगों की लाइफ कैसी हो गई है, डिपार्टमेंटलाइज्ड। हर चीज के लिए फिक्स टाइमिंग्स हैं, ऑफिस जाने के लिए फिक्स टाइमिंग्स है, बच्चों को देने के लिए फिक्स टाइमिंग्स है, किसी चीज के लिए अगर कोई कोर्स करना है उसके लिए फिक्स टाइमिंग है। Everything has got a very fixed slotted time schedule and everything. All right. Now they say in the second line as a joke probably that it must be incomprehensible to primitive people. मतलब पुराने जमाने के लोगों को अगर हम बोलते, आज के जमाने का कोई बोल देता कि मुझे वेकेशन पे जाना है, तो वो शायद ये बोलते कि ये क्या होता है वेकेशन, क्योंकि उन लोगों की ये आदत थी that they used to fit in vacations with feast days or हॉलीडेज। ठीक है, उनके लिए इतना नेसेसरी था, दैट्स इट। उससे ज्यादा उनके लिए वेकेशन अलग से छुट्टियां लेना वाज नॉट अ स्पेसिफिक टर्म फॉर देम। ऑलराइट, moving on to the last paragraph, it says with modern man's increasing tensions with the useless quality of so much of his work, this break in the year's routine has become steadily more necessary. Vacations became necessary for the purpose of renewal and repair. Alright? तो अब वो लास्ट पैराग्राफ में उसको कैसे कंक्लूड कर रहा है बोल के कि पहले का जमाना ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, बट मेरे हिसाब से तो ये ऐसा है कि हमको वेकेशंस लेना जरूरी है। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं ऑथर का खुद का व्यू भी हमको समझ में आ गया लास्ट पैराग्राफ में। अगर मैं आपको बिना क्वेश्चन दिखाए एक चीज पूछूं कि आप लोगों को समझ में आया कि ऑथर क्या चाहता है, तो आप मुझे बहुत ही क्लियरली बता पाओगे कि व्हाट इज इट दैट द ऑथर फेवर्स, vacations or no vacations. It is very clear that he is a person who favors vacations and he is also giving reasoning for the same. How is he giving the reasoning? It says in the second last line that the break in the year's routine became steadily more necessary. ठीक है, that's how he says it. And in the end it says that vacations became necessary for the purpose of renewal and repair. That's how he ends that पैसेज। तो ऑल इन ऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं था। इस पैसेज की लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर हम एलओडी देखें तो इट वुड बी समवेयर फ्रॉम इजी टू मीडियम। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी एनकाउंटर। सिर्फ पैसेज कैसा है, सिर्फ पैसेज समझना इज वन थर्ड ऑफ द पैसेज, वन थर्ड बैटल वन। The second battle will be won when you have understood the options and the questions. And the final battle will be won when you are able to answer each question correctly. All right. But please remember, I said that before and I'm saying this again, that NATA has easy to medium level of questions of reading comprehension. कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना इजी लेवल नहीं देखा गया है। पैसेज हो सकता है इससे लेंदी आया आप लोगों को, बट क्वेश्चंस का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो इससे डिफिकल्ट नहीं देखा गया है। ऑलराइट, इन द पास्ट फ्यू इयर्स। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज द ऑथर्स मेन पर्पस इन दिस पैसेज इज टू। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मेन पर्पस, वो हमसे क्या मांग रहा है, उसका कंसाइज आइडिया। ठीक है, सरल। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या लिखा हुआ है पैसेज में, तो आप उस चीज का क्या जवाब दोगे? आप ये जवाब नहीं दे सकते सिर्फ कि वेकेशन के बारे में लिखा गया, बट यू विल टेल मी एग्जैक्टली व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द passage. All right, so basically the answer to this question, if we read the options, it says explore the history of vacations,
Tell why vacations have become more common. Contrast holidays and festive occasions with vacation. And the last one is demonstrate that vacations are not really necessary. Now, to all those who have solved this passage with me, uh, I will give you another 30 seconds to give me answers for this, and then I will explain to you what the answer is. Yes, I can see that a couple of you have started answering already. Someone has answered B, someone has answered A. Okay. Yes, anybody else, or should we start with the answers? Nitin, am I audible to you now? Please type something in the message if I'm audible to you. Ashwini says that the answer is D. Let me please explain to you what the options say. All right. Explore the history of vacations. First वाला ऑप्शन है, ठीक है? जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था तो ऑप्शन पैराग्राफ 1 बात कर रहा था पहले वेकेशंस कैसे होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया था कि फिर वेकेशंस कैसे होने लगे। लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि ऑथर को लगता है कि जो अब हो रहा है वो अच्छी बात है, दैट वे, ठीक है, और ही सपोर्ट्स दैट. सो बेसिकली ए वुड बी योर आंसर, बट लेट अस सी व्हाई बी, सी एंड डी विल नॉट बी आवर आंसर. Vacations were once the prerogative of the privileged few. अब जब 19th सेंचुरी की भी बात हो रही थी तो वो बोलता है कि तभी तक भी वेकेशंस बहुत सारे लोग नहीं लिया करते थे, बट अब हर किसी का हक बन गया है वो, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ vacations in the entire passage. That's what the first line starts with. ठीक है. जब हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, अगर मैं आपको बोलूंगी कोई चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो आप है ना सबसे पहले क्या सोचोगे, एक धांसू लाइन होनी चाहिए यार जिससे मैं पैसेज स्टार्ट करूं, राइट, या जो भी आप बोलना चाह रहे हैं उससे स्टार्ट करूं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एन ऑथर डज व्हाइल ही इज राइटिंग अ पैराग्राफ. ओके. तो व्हेन वी आर राइटिंग अ पैराग्राफ, what we will focus on is something like this exactly. Okay. Now let's go to the next option. The next option says tell why vacations have become more common. क्या रीजनिंग दी गई थी पूरे पैसेज में कहीं पर भी कि वेकेशन कॉमन हो गए हैं और क्यों हो गए हैं? अगर ऐसा था तो फिर वो पूरा पैसेज उसी के बारे में बात कर रहा होता, राइट? अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर वेकेशन कॉमन क्यों हो गए हैं इसके बारे में लिखो, तो आप मुझे पॉइंटर्स दोगे, इसलिए कॉमन हो गए हैं, इस वजह से कॉमन हो गए, इस वजह से कॉमन हो गए. बट आप ऐसा पूरा पूरा कोहेसिव वो नहीं बनाओगे कि पहले कैसा था अब कैसा है. यू वुडंट राइट इट लाइक दैट. ओके. कॉन्ट्रास्ट हॉलिडे एंड फेस्टिव ओकेजन्स, नो, दिस वाज जस्ट मेंशन्ड इन वन सिंगल लाइन वेयर दे वर टॉकिंग ऑफ कि पहले लोगों को वेकेशंस की नीड क्यों नहीं थी. ओके. यस. And the last one says demonstrate that vacations are not really necessary. Demonstrate the whole thing is a complete no answer. All right. Moving on to the next question. According to the passage, we need vacations now more than ever because we have a more carefree nature, much more free time, little diversity in our work, and a higher standard of living. ये चार हमारे options दिए गए हैं. Let's see where we can find our answer. If you can read the highlighted lines, you will see your answers there. It says they are more necessary now than ever because the average life is well-rounded and has become increasingly departmentalized. The second marked or highlighted one says, with the useless quality of so much of his work, this break in the year's routine became steadily more necessary. All right. So very clearly, our answer will be that there is little diversity in our work, and which is why vacation provides us with that diversity. All right.
मूविंग ऑन अहेड, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। देखिए हम लोग पैसेजेस तो कुछ ही सॉल्व कर पाएंगे इस देर में, बट what will be more helpful is when I am able to explain to you the level of passages that we have and how you need to attempt those passages. All right, ये याद रखना है हमें, least amount of time, मैक्सिमम मार्क्स, ये होना चाहिए हमारा गोल जब हम इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, जब हम नाटा के लिए बैठ रहे हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, the contemporary attitude towards vacations is best expressed by which of the following proverbs? अब यहाँ पर जो चार proverbs दिए गए हैं, सबसे पहले हमको उनका मीनिंग समझना जरूरी है। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपने इन्फर किया है, इन्फरेंशियल क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये लाइंस, इन चारों लाइंस में से कोई भी लाइंस आपने पैसेज में नहीं पढ़ी होंगी, बट जब आप ये रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कनेक्ट क्या है उस पैसेज से। इस चीज के लिए जरूरी है कि हम समझें कि हर प्रोवर्ब का मतलब क्या है। ठीक है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, मतलब फालतू का पैसा खर्च नहीं करना। ठीक है, अगर हमने 1 रुपया भी बचाया तो उससे कुछ कमा लिया, दैट वे। सेकेंड सेज द डेविल फाइंड्स वर्क फॉर आइडल हैंड्स, है ना, इसके लिए तो हिंदी में हम बहुत अच्छे से बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, राइट। थर्ड सेज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय, मतलब अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे और कुछ अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट, चेंज, हैप्पीनेस नहीं ढूंढेंगे तो उससे हमारी लाइफ डल होगी। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क मतलब बहुत सारे लोग अगर किसी चीज को साथ में करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मुझे बताइए पर्टेनिंग टू द पैसेज आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है सी सी, यस द आंसर इज सी। लेट अस सी वेयर इट इज विजिबल। It says vacations become necessary for the purpose of renewal and repair. आप नोटिस करेंगे कि ऑथर का लास्ट पैराग्राफ में खुद का व्यू है। ठीक है, और वो ऑथर ये इसी व्यू से अग्री करता है कि हमको हाँ छुट्टियां लेनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारे रिन्यूअल के लिए, हमारे रिपेयर के लिए, बॉडी के, दिमाग के रिपेयर के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो द आंसर टू दिस इज वेरी क्लियरली ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट। अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है जहां पे दिया गया है ग्लास, कार्डबोर्ड, मेटल शीट एंड वुडन ब्लॉक। आई विल गिव यू a minute to think of what the answer is, but you have to tell me why that is the odd one out, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था। ठीक है, somebody says it is metal sheet. Why is it metal sheet? ऋषिका आपको मुझे बताना पड़ेगा। Yes, anybody else? Are there any more answers or should I come up with my answer? All right. So let me move on with the answer. The answer to this is glass and not metal sheet. I'll tell you why. क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो बाकी जो भी चीजें हैं वो ओपेक हैं। ठीक है, उनमें से लाइट पास थ्रू नहीं हो सकती है, जबकि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वहां से लाइट पास थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज glass and not metal sheet or cardboard like some of you have been answering.
Moving on to the next question, find the appropriate analogy. Happiness is related to sorrow the same way as comfort is related to. तो सबसे पहले let me explain to you कि यहाँ पर analogy क्या use की गई है. Happiness and sorrow are synonyms and antonyms, opposites of each other, okay? And कंफर्ट के लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, फिर हमको एक कंफर्ट के लिए ऑपोजिट वर्ड ढूंढना पड़ेगा. चार जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं वो हैं हार्डशिप, रेस्ट, डिफिकल्टी एंड पावर्टी. ठीक है, तो कंफर्ट मतलब ऐशो आराम, तो उसके लिए हमारा आंसर होगा हार्डशिप. Yes, a lot of you are answering. It is hardship. Thank you so much. Moving on to the next question, we have another passage that is based on your NATA. All right. ये भी पैसेज नाटा जुलाई 2023 में 2022 में आ चुका है. All right. So let's go on and see what this passage talks about. In the study of arts and sciences, architecture ranks highly as one of the most fundamental and practical subjects based on human culture. Architecture is a living proof of the persistence of man's ideas with the passage of time. अच्छा, जब मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों को लगता है कि कोई भी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं समझ में आई है, प्लीज पिंग ऑन द चैट और whatever and I will get back to you with the meaning of that word. कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं वर्ड की मीनिंग पहले ही बता दूं. ठीक है, तो परसिस्टेंस मतलब टिके रहना, परसिस्ट करना. ऑलराइट. Moving on to the next line, it says, back in prehistoric times, early man lived in caves. Many years later, simple huts were erected to replace the caves as places of dwelling. Places of dwelling होती है रहने की जगह. Okay. The earliest known huts were found in Russia and were made from mammoth bones. ठीक है, हाथी से भी बड़ा जो एक स्ट्रक्चर होता था, अगर आप लोगों ने आइस एज देखी है, वहां पर वो हाथी जैसा एक कैरेक्टर था, उसके बड़े बड़े दांत थे, तो दैट वाज नोन एज अ मैमथ. ठीक है, तो उसके बोन से बने हुए जो हट्स हैं उसका आज भी पता चला है that they are the oldest huts that are found, all right, for dwelling. As more time passed, man learned to build stronger and bigger buildings. These served as temples for worship or as tombs for important people. Tombs को हिंदी में बोला जाता है मकबरा. All right, मकबरा वो होता है जहां पर किसी important person की डेथ के बाद उसको दफनाया जाता है. All right. Between the years 2700 BC and 2200 BC, the Egyptians built massive stone pyramids. Massive is a good word for large. ठीक है? Gigantic would be another synonym for the same. Okay? Which are still standing today, some 4,000 years later, to honor their gods and pharaohs. Okay? PH is pronounced as Pharaoh. Pharaohs. What do you mean by pharaohs? The Egyptian kings were known as pharaohs. एक और हिंदी में जो किंग्स थे उनको बोला जाता था राजा, और जो रशियन किंग्स थे उनको बोला जाता था जार. CZAR. ठीक है, तो हर कल्चर में अपने राजा को कुछ अलग नाम से बुलाया जाता है. सो दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर. ऑलराइट. These pyramids are one of the seven wonders of the world. Wood was a popular building material with the Chinese and the Japanese. ठीक है? Many Buddhist temples were built from wood. The roofs of these buildings were covered with tiles that gently curved upwards. आपने किसी पगोड़ा का स्ट्रक्चर अगर देखा हो तो that is exactly what they are saying. Okay? तो पगोड़ा जैसा होता है, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके वो टाइल्स जो होती हैं वो कार्व्ड होती हैं बाहर की तरफ. ठीक है. Wooden Japanese houses still retain the same design as those constructed centuries ago. Lovely. Rooms in such houses are divided by paper screens. All right. So the what was used, not the paper that you write on, but yes, a thicker parched paper. आपने जापानीज या चाइनीज लैंटर्न्स भी देखी होंगी जो पेपर की बनी हुई होती हैं. दे आर मेड ऑफ अनफिनिश्ड पेपर विच इज थिक इन क्वालिटी. ठीक है, जो ज्यादा GSM वाले पेपर आप बोल सकते हो उसको. ठीक है. Moving on, rooms in such houses were divided by paper screens. In India, the Hindu temples are the pinnacle of Indian architecture. Pinnacle का मतलब होता है the highest peak, the acme, the zenith. ठीक है.
तो पिनेकल का आपका सिनोनिम होगा एक्मे या जेनिथ. Huge carved statues of Hindu gods decorate the pillars and the roofs of these temples. Greek architecture from the period 450 BC to 400 BC has greatly influenced the Western designs. All right. So this was the passage. Now let us see a question based on the passage. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम पैसेज पढ़ते हैं उसके पहले अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो हमारे लिए वो इजी होता है. ठीक है, अगर आपके लिए वो अप्रोच इजी है तो प्लीज गो थ्रू दैट. बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट इफ यू आर रीडिंग अ पैसेज अर्लियर, व्हाट हैपेंस इज कि आपका माइंडसेट किसी भी जजमेंट के साथ मूव ऑन नहीं होता है. ठीक है, यू आर फ्री ऑफ जजमेंट व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज एंड देन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. ओके, so it is your take on it, but my take on it is that I usually read the passage first and then attempt the questions. Seeing the question, what was early man's first habitat? ठीक है, तो जिसका जिक्र किया गया है यहाँ पर, बैक इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स. तो हमारा आंसर बहुत ही क्लियर है, ये होगा केव्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आगे. What kind of architecture has influenced the Western designs? All right. Now, if you see the second last or the last line, yes, the last line, it says Greek architecture from this period to this period has greatly influenced Western designs. So the answer to this question is going to be A, Greek, right? Uh, Moving on to the next question, but before I move to the next question, I would just like to point out, आपने दो passages किए, दोनों नाटा में आए हुए हैं. आपने नोटिस किया कि इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था. ठीक है, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप नाटा के पेपर के लिए जाएं कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. अगर मैं रोज एक पैसेज भी सॉल्व कर लूंगा जो कम से कम 10 से 12 लाइन के बीच में होगा, I will be able to crack the NATA exam easily where passages are concerned. ठीक है, तो कोई भी वर्कड अप होने की जरूरत नहीं है, आपके पास शायद कम समय बचा है नाटा प्रेप के लिए. तो इंग्लिश के लिए अगर आप रोज 1 घंटा भी देते हैं, इट इज मोर देन इनफ, बिलीव मी. ओके, बाकी का आप पूरा टाइम आप अपने डिजाइन वाले इसको, ड्राइंग वाले पार्ट को, एप्टीट्यूड वाले पार्ट को, मैथ वाले पार्ट को दे सकते हैं. ऑलराइट. स्क्रब इज रिलेटेड टू वॉश. तो स्क्रब एंड वॉश में क्या रिलेशनशिप है? वॉश होता है लाइटली वॉश करना, स्क्रबिंग होता है जोर जोर से स्क्रब करना. ठीक है, तो जब वॉश का हायर लेवल की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको? स्क्रब. तो स्क्रब विल बी हायर लेवल, वॉश विल बी लोअर लेवल. ठीक है, तो सॉब इज रिलेटेड टू वॉट. तो उसी तरीके से हम लोगों को क्या ढूंढना है? हायर और लोअर लेवल. ऑलराइट, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी cry, right? Sobbing is धीरे धीरे रोना. Crying is when you're full-fledgedly crying your heart out. ठीक है, खुदा ना खास्ता कभी भी आप पे ऐसा टाइम आए. I hope that you guys keep smiling. All right. So yes, there are a couple of people who have also answered. Uh, it is cry and not water or sad. Okay. Choose the odd one out. Now, again, you have an odd one out question. The options that you have in front of you are wheat, rice, maize, and pea. तो आपको पता होगा कि wheat, rice और maize क्या है? ये तीनों सीरियल्स हैं. ठीक है, सीरियल्स क्या होते हैं? टीवी वाले सीरियल नहीं, खाने वाले सीरियल्स. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इन दिस ऑप्शन, इट वुड बी P. Yes, thank you so much. I can see a lot of you have answered P. Thank you very much. Moving on to the next question. Choose the antonym of foremost. Let me first explain to you the meaning of word foremost. Again, foremost is a combination. It is a compound word, combination of two words. For means front and most is very. ठीक है, सबसे ज्यादा. तो सबसे पहले पहले खड़े होने को क्या बोलते हैं? Foremost. ठीक है, तो सबसे आखिरी खड़े होने को क्या बोलेंगे? It will be hindmost. Yes, hind legs सुना होगा आपने, four legs सुना होगा आपने. Yes, so fore and hind, foresight, hindsight, बहुत ही commonly ये
प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं. फोर मीन्स फ्रंट एंड हाइंड मीन्स बैक और लास्ट. ठीक है. A lot of you are answering hindmost, they are answering. Thank you so much, each one of you, for participating, being with me, and sticking around, participating in the chat. I'm very happy that each one of you has participated. All the best to each one of you for your NATA exam. My suggestion to you would be give 1 hour to English still. Okay, आपको कुछ भी worry करने की जरूरत नहीं होगी. I promise you that. ठीक है. In the meanwhile, in case you have any queries, in case you have any doubts which are still unclear, not cleared, you have a helpline number scrolling down below in this video. Please get in touch with us and we will be happy to help you. So this is me, Muskan Mulchandani, signing off from Creative Edge. All right. And I shall meet you soon. Hopefully you will crack the NATA very soon, very well. All right. Best of luck to each one of you.